सावित्री इसका नाम ताली मारी थी, किसी ने मेरे को बताया था, तो किसी ने नहीं इंस्टा पे मैसेज रिप्लाई किया तब, तो मैं कहा सावित्री, ये सती सावित्री नाम नहीं बिल्कुल झूठ नहीं, सती सावित्री तो नहीं है, सावित्री was such a surprising name, but you kept इसमें कुछ और नाम भी रखा, करिश्मा, दोनों ग्रुप चल रहे हैं ना तेरे, बोलना मत कुछ नहीं, वो कल आके बात मानेंगे। और पढ़ेंगे एक बार ये क्वेश्चंस करते हैं, 20-25 दिन में पढ़ेंगे। है क्या लॉ का क्वेश्चन, लॉ का ही है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हाँ, मतलब करने बाद में देख लेंगे, अभी मतलब अगर चाहिए भी तो क्रैश बाय करके रख ले, बैच बाय करके रख ले, बट देन वॉच इट आफ्टर वंस वी आर डन। वो बोल रहे थे कि जो अपना ESG चैनल के लॉ के है ना, उसके कुछ सॉल्विंग सेशंस है, वो देख ले उधर। हाँ अभी कुछ नहीं, एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव करेज टू, हाँ लिंक आ गई हमारे पास में, लिंक आ गई आपकी, अरे मुझे लगा कि वो हो गया अनाउंसमेंट उसका, लेक्चर है कल वो लेकर से जो पढ़ने वो अभी पढ़ा था, 1 मिनट आया, अरे मैं सीट का पूछ रहा हूं, चल लाला चल आ जा, मैं एक ही सेकंड ना, ये वाला और वो वाला दोनों, ये टेबल थोड़ा सा बाहर तक आते ही रहेगा क्या भैया, या खाली पोडियम, खाली पोडियम बड़ा कर देंगे या हमने कर दिया, ये वहां से भी कैमरा टेढ़ा कर हाँ जी दोस्तों, व्हाट्सअप, क्या हालचाल सब लोगों के, आप सब लोगों को प्रणाम, कैसे हो? सो सॉरी, अरे यार यहाँ पर आज थोड़े से हमारे पुराने बच्चे भीड़ बसड़ कर, पुराने तो नहीं है, लेटेस्ट वाली हैं, ये सब थोड़ी भीड़ बसड़ करके बैठे थे और मीनवाइल हम सेटअप को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे थे, फॉर दैट रीज़न हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो माफ़ी चाहेंगे आपसे, पर पूरी कोशिश करेंगे कि ये आपका पेपर बहुत ही शानदार करवा दें, आपको इश्क हो जाए, प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, एकदम पप्पी देने का मन करे मुझे, ठीक है? आ जाओ, पधारो। कैसी भाई, कैसी चल रही तैयारी, हाउस इट गोइंग? सबने मैराथन देख लिया, प्रीवियस पेपर देख लिया? ये बैठते इतना नीचे रहेगा, कोई ना कोई तो क्या हुआ, ये देखो ना, इसको मेरे को भी सिखाओ ना, इसको, इसमें अपने को करना है कैम, इसमें से ना ब्लैक इसको तो खाली अनलॉक कर दें और ये हल्का सा, सॉरी ये रहा, अभी सही है, ये सही है, और नाम स्टार्ट कर देते बस, बस ये तो ठीक है, ये नीचे हो गया बहुत, ठीक, बहुत है, परफेक्ट भैया, धन्यवाद। लाइव वाले लड्डू आज कौन सा, आज December 24 करेंगे,
सविता जी कह रही है प्रीवियस पक्का, हेयर मस्त लग रहे हैं आज, थैंक यू सो मच नवनीत, आई रिमेंबर द लास्ट टाइम्स कॉमेंट आथू, चलेगा भैया, थैंक यू सो मच। ठीक है शेरो, चलो शुरू करें। प्रीवियस सेशन पब्लिक कर दें, ठीक है। हाँ जाओ, ओके अच्छा, एक मिनट खाली बिफोर आई से दिस इज डन। मैराथन हो गया, आपके प्रीवियस पेपर सॉल्व, अभी बस ये लास्ट पेपर सॉल्व करा के मैं आपको फ्री कर दूंगा। विद दिस नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट इज लेफ्ट इज अमेंडमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अमेंडमेंट्स की जो आपकी शीट है दैट लुक्स फॉर 50 पेजेस, बट अमेंडमेंट्स टेक्निकली उसमें 17, 18, 19 पेजेस के होंगे या 20 पेजेस के होंगे। मैं कल आपकी शीट पूरी कंप्लीट कर लूँगा, सो एक्सपेक्ट कि मैं परसों आपके अमेंडमेंट के लेक्चर रखूँगा दिन में, और एक ही शॉट रखेंगे 3-4 घंटे का, अमेंडमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे आपके, ठीक है। हाँ हाँ, माइंडसेट 25, 26 500 खत्म। नहीं सौम्या, वी आर कीपिंग 2 पेपर्स बिकॉज बच्चे काफ़ी कम होते ही जा रहे हैं, सब लोग इतना अटेंड भी नहीं कर पा रहे हैं और एंड आता जा रहा है, सो वी आर नॉट कीपिंग द 3rd पेपर। मैंने सभी का जो थर्ड पेपर था वो सबका ही हटा दिया, सबके ही 2-2 कर दिए, मतलब एग्जीक्यूटिव में भी 2 कर दिया, आपके भी 2 कर दिए। सो टुडे इज द लास्ट सेशन ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है सौरभ, आई डू दैट, बस दिस इज द लास्ट सेशन, डन। शुरू करेंगे सर। मेजर अमेंडमेंट नहीं, मेजर कुछ नहीं है, बहुत ही फालतू। यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड डाल दिया है, आयरिश का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड डाल दिया है, एग्जाम पर्सपेक्टिव वैल्यू 0 मार्क्स ही कैरी करता है, पर एक बार आपको बताना जरूरी है, ठीक है सर। आई सॉ दिसंबर का पेपर, इट वॉज काइंड ऑफ ट्रिकी, चलिए वील सॉल्व द ट्रिक्स, डोंट वरी। लेट मी ओपन द पेपर एंड वी आर गुड टू स्टार्ट। ठीक है मैडी, कूल, हैवी आर विद द पेपर। अच्छा पर एक देखो, एक चीज़ अच्छी हो गई ना, मेरे आंसर राइटिंग हो गई, मुस्कान की आंसर राइटिंग हो गई, तो नाउ यू शुड बी मच मोर कॉन्फिडेंट इनफ फॉर ए पेपर्स। प्लीज पास हो कराना, है ना, बेइज्जती मत कराना। चिराग, वील टॉक अबाउट दिस फॉर श्योर, आज के सेशन के एंड में अपन करते हैं, ठीक है। ध्वनि अटेंड दिस सेशन और अपन एंड में फिर से चर्चा करते हैं कि व्हाट मोर कैन बी डन। शुरू करें, आर वी गुड टू गो? ऐड आ रही है, आई अंडरस्टैंड। हो गई सबकी एड्स कंप्लीट हो गई? आ जाओ। ठीक है नव्या, वो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है पर फिर भी कर लेंगे। 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट। एज अ डन, लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ लास्ट पेपर में अपन ने चर्चा करी थी कि स्ट्रैटेजी क्या होगी। आई टोल्ड यू कैन गो फॉर बी, सी एंड देन ए, यू कैन गो फॉर सी, बी, ए एंड यू कैन गो ए, बी, सी, एनीथिंग वर्क्स, सो दैट्स योर चॉइस। आपको कैसे करना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू हैव ऑल द राइट टू अटेम्प्ट द पेपर द वे यू वांट टू। ए ऑब्वियसली सबसे सब्सटेंशियली ज़्यादा टाइम खाएगा और बी और सी सब्सटेंशियली काफ़ी कम टाइम खाते हैं। सो दैट्स अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हैं इस पेपर को, ठीक है। माई सजेशन बी, सी, ए और सी, बी, ए, राइट, दैट्स माई रिकमेंडेशन। आई एम जस्ट पुटिंग अप माई रिकमेंडेशंस फॉर यू।
चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम पार्ट ए से ही करेंगे, हम पार्ट ए से ही करेंगे। आ जाओ, ऑन योर स्क्रीन्स इज द क्वेश्चन पेपर। कैन यू सी दिस? चलिए, हाँ जी, बीसीए और सीबीए एनीथिंग वर्क्स। नाउ आ जाओ, कभी भी जब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा तो वी विल स्टार्ट, कभी भी जब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा तो वी विल स्टार्ट पहले क्वेश्चन से एंड देन वील गो बैक टू योर पैसेज, राइट? सो यहां पर है, डू यू थिंक आरसीएल्स बोर्ड कॉम्पोजिशन इज राइट एज पर सेबी एलओडीआर? और एनएससी और प्रॉक्सी एडवाइजरी गाइडलाइंस के हिसाब से बोर्ड साइज बताइए। आई थिंक अगर आपने मैराथन भी देखा होगा तो मैंने आपको ये रटवा कर दिया होगा कि प्रॉक्सी एडवाइजरी जरूर याद करके जाओ, ठीक है? आ जाओ, अरे क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब कैसी भी अटेम्प्ट करो। The board of directors are willing to appoint Rohan from 1st August for a term of another 5 years. क्या उसका रीअपॉइंटमेंट वैलिड है? यार देखो, यहाँ ना मेरे को इधर तक क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि पैसेज तो पढ़ना ही पड़ेगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो मेरे को पहली चीज जाननी है कि आरसीएल का बोर्ड कॉम्पोजिशन सही है कि नहीं। तो याद रखना, ऊपर की रीडिंग में बोर्ड कॉम्पोजिशन पे ध्यान देना। सेकेंड क्वेश्चन है कि रोहन को रीअपॉइंट करना चाह रहे हैं वो 5 साल के लिए, क्या ये रीअपॉइंटमेंट वैलिड है? तो यानी कि मुझे रोहन का अपॉइंटमेंट ऊपर देखना है, कुछ लफड़ा तो नहीं है। एंड टेन्योर ऑफ आईडीज एंड मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायरमेंट बताना है फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एज पर आईआईएएस। आईआईएस याद है क्या आपको? मैंने आईआईएस आपको याद कराया था रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट से, याद है क्या? आईआईएस मतलब वो रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट, पीछे से गिनने का, जहां से वो अपॉइंटेड है वहीं से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर गिनने का। 75% अटेंडेंस लगती है उसको एवरेज 3 साल के अंदर, याद है कुछ आईएएस का पॉइंट? और रीअपॉइंटमेंट में इन लोगों ने कहा था कि इन टोटल 10 साल से ज़्यादा तो वो हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, सही है? और इसमें अपन ने आईआईएस में वीज़ा रूल भी पढ़ा था, जस्ट इन केस इफ़ यू ब्लडली रिमेंबर वीज़ा रूल। वीज़ा रूल के अंदर अपन लोग कहते थे कि भैया वो अगर 6 महीने में 10 साल पूरे होने वाले हैं तो इट विल वोट अगेंस्ट। डू यू रिमेंबर दैट? ये आईआईएस का आ गया। तीसरा है एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटेड टू रोल ऑफ एनआरसी। ठीक है, रोल ऑफ एनआरसी बताना है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर इवैल्यूएशन ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी सेक्रेटरी इन्फॉर्म्स यू दैट रोया, अब रोया के लिए कुछ चेक करना है अपने को। रोया सेज इट इज नॉट नेसेसरी टू इंक्लूड इन द बोर्ड रिपोर्ट अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द मैनर, कि हमने कैसे एनुअल इवैल्यूएशन किया है ऑन इट्स परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इज रोयाज व्यू करेक्ट? नो, रोया जो भी हो वो गलत रो रही है। हर लिस्टेड कंपनी को अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर एक स्टेटमेंट देना होता है ऑन द एनुअल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया एज वेल एज अपनी इवैल्यूएशन पॉलिसी की डिटेल्स वेबसाइट पर पब्लिश करनी होती है। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, एग्जामिन द डिसीजन ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट ओजस एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ओजस का अपॉइंटमेंट देखना है, क्या ओजस ने वायलेट किया है द प्रोविजन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। सी वी डोंट नो कि ओजस ने वायलेट किया है या नहीं किया है। डन। यहाँ पर आपको एक छोटा सा रूल याद होगा, मैक्सिमम डायरेक्टरशिप रूल है 20 कंपनीज, 20 कंपनीज में से 10 पब्लिक कंपनीज एंड 10 मतलब मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज हो सकती हैं। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में सब्सिडरी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज ऑल्सो काउंटेड। इस डायरेक्टरशिप में डॉर्मेंसी वाली डायरेक्टरशिप को काउंट नहीं किया जाता है, राइट? यस हनी, परफेक्ट। एज पर अप्रैल, अच्छा ये तो क्वेश्चन हो गया। तो अब अपने को ये पैसेज तो रीड करना ही पड़ेगा बिफोर वी कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, आ जाओ बेटू। नाउ रॉयल केमिकल्स लिमिटेड अ कंपनी लिस्टेड विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, लिस्टेड कंपनी है, हैविंग 60% मार्केट शेयर इन पेंट मैन्युफैक्चरिंग,
ठीक है, मार्केट शेयर से कोई क्वेश्चन ही नहीं था. इट ऑल्सो डील्स इन पेट्रोकेमिकल्स which are used in numerous household products like wax, detergent, dyes, carpeting, safety, etc. RCL is one of the top 1000 listed companies. दो चीजें मुझे काम की दिख रही है. It's a listed top 1000 listed company. As per the audited financial statement 2024, इसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 300 करोड़ है एंड जो इसकी ऑथराइज कैपिटल है वो 500 करोड़ है एंड रेवेन्यू 2200 करोड़. ठीक है, फालतू है, रेवेन्यूज के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था. ठीक है. RCL हैज 13 डायरेक्टर्स. ये काम का है. इनके पास 13 डायरेक्टर्स हैं ऑन इट्स बोर्ड, ऑफ विच 5 आर इंडिपेंडेंट. 13 में से 5 आईडी है. द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी रेस्ट्रिक्ट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू 15. RCL कॉन्शियस है ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एंश्योर्स कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी एंड लीगल प्रोविजन इन बोथ लेटर एंड स्पिरिट. रोया एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. ठीक है, तो रोया हमारी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इज चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी. मीनू इज द ओनली वुमेन डायरेक्टर. ठीक है, मीनू इनकी वुमेन डायरेक्टर है. द कंपनी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटीज एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड सेबी LODR. ऑडिट कमिटी कंसिस्ट ऑफ 5 डायरेक्टर्स. ऑडिट का रूल होता है 3. अमन, जतिन, रोहन, केन, जीतू. Among the 5 IDs, Rohan was reappointed after completing his term of 5 years. ठीक है, मतलब इसका सेकेंड टर्म है. उसकी efficient performance was ranked first in the performance evaluation criteria to recognizing the outstanding result towards company's growth. Board wants to reappoint Rohan for the 3rd term. लो, रोहन वाला क्वेश्चन मिल गया. ये लोग रोहन को आईडी के फॉर्म में अपॉइंट करना चाहते हैं 3rd टर्म के लिए. बोलो अलाउ होगा क्या? इसका आंसर होने वाला है नहीं. ठीक है, इसका आंसर होने वाला है नहीं फॉर श्योर, है ना. द बोर्ड ऑल्सो सॉट कंपनी सेक्रेटरीज ओपिनियन इन दिस रिगार्ड. डन. द कंपनी हैड सक्सेसफुली कंक्लूडेड इट्स AGM फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31st 2024 ऑन May 20. ये मिसप्रिंट है दोस्तों, ये मिसप्रिंट है. 21 मार्च की मीटिंग 25 मई 2024 में हुई होगी. 2025 में 1.5 साल बाद मीटिंग कर रहे हैं क्या? नॉट अलाउड है. एंड इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट पुणे. ऑन द फेटफुल डे वाइल रिटर्निंग टू मुंबई फ्रॉम पुणे बाय रोड आफ्टर हर रीअपॉइंटमेंट एट AGM. कौन? अ फेटल एक्सीडेंट क्लेम द लाइफ ऑफ अरे मीनू मर गई रे. मीनू इज नो मोर, thus snatching an efficient and trustworthy director. Later on, a board meeting was held on 9th August 2024 and Neeru, a finance professional and daughter of the deceased director Minu, was appointed as director to fill the vacancy of women director. ठीक है, तो बाद में अपन लोगों ने नीरू को अपॉइंट किया है. RCL is a growing company which wants to diversify into the agrocultures, मतलब agrochemicals, and desires to bring on board OJAS. OJAS पे कोई क्वेश्चन था क्या? I doubt OJAS पे कोई क्वेश्चन था क्या? है एडिशनल डायरेक्टर की तरह ला रहे हैं. Who is a chemical engineer with hands-on experience of about 20 years in the field of agrochemicals and other petroleum products. Besides production, he is well vested in marketing of agrochemicals both in India and abroad. It is hoped that he shall prove to be a valuable asset of the company. Accordingly, in the board meeting held on 9th of August, OJAS appointed as an additional director. OJAS already held directorship in 1 dormant company, 2 Section 8 companies, 8 public companies and 9. 8 plus 9 आज आपके आ गए 17, 19, 20 कंपनीज हो चुकी है. However, out of 9 private companies, 2 are subsidiaries of public companies. तो ये टोटल 20 कंपनीज में डायरेक्टर है, जिसमें से 8 प्राइवेट है, 8 पब्लिक है, बट 2 और सब्सिडरीज हैं ऑफ पब्लिक ओनली. तो टोटल 10 पब्लिक हो गई और बाकी की 10 में से एक डॉर्मेंट कंपनी की डायरेक्टरशिप काउंट नहीं होती. पर दिक्कत यह है कि 10 पब्लिक कंपनी में ऑलरेडी है. दिक्कत यह कि 10 पब्लिक कंपनी में ऑलरेडी है, हेंस इसका अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं होगा.
ठीक है, दैट्स इट, वी गुड टू गो। बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन है यार, आ जाओ। डू यू थिंक आरसीएल का बोर्ड कॉम्पोजिशन सही है? सेबी एलओडीआर के हिसाब से बोर्ड कॉम्पोजिशन क्या होता है? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जिसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मेजॉरिटी होने चाहिए। सेकेंड, टॉप 2000 में इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर लग रही थी, तो दे नीड टू हैव इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। तीसरा, इनको एग्जीक्यूटिव, आई एम सो सॉरी, तीसरा आईडीज, अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है तो 50% आईडीज, चेयरमैन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 आईडीज, और अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है बट रिलेटेड टू चेयर प्रमोटर है तो 50% आईडीज। याद आया कुछ? यस नव्या, नहीं होगी काउंट। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट है। आर वी गुड टू गो? शुरू करेंगे आंसर। आ जाइए दोस्तों, 1A, दिस इज योर पार्ट 1। दोस्तों आवाज क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, एवरीथिंग लुक्स फाइन? चलो, board composition of any listed company, perfect। हाँ जी, board composition of any listed company as per SEBI LODR is as follows. The board should have an optimum combination of executive and non-executive directors and not less than 50% shall be non-executive directors। दूसरा, in regards to independent directors on the board, where chairperson is 50%
executive director, at least 50% of the board must comprise of independent directors, where chairperson is a non-executive director at least 1/3 of board must be comprising of IDs, where chairperson is non-executive but related to promoter. At least half of the board should be इंडिपेंडेंट. तो ये आईडी हो गया, ये एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो गया. सी, every listed company must have one women director and further the top 1000 listed entities must have an independent women director. तो कॉम्बिनेशन हो गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया और वुमेन डायरेक्टर हो गया. एक चीज और, the board of top 2000 listed entities must have at least 6 directors. एक मिनट. In this case, the board composition of RCL is not valid as A. एक सेकेंड ना. ठीक है. As they are
into top 1000 companies, they need to have independent women director. B, they have an executive chairman, hence the minimum number of IDs shall be 50%, that is 7. In this case, बस यही है ना? छह डायरेक्टर्स तो हैं इनके पास, वुमेन डायरेक्टर नहीं है और एग्जीक्यूटिव, ठीक है, डन। क्या ये फर्स्ट पार्ट एकदम क्लियर है आप सब लोग को दोस्तों? नाउ एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर देना, is minimum 8 directors and where public shareholding exceeds 50%, more than half of the board to be independent, and if up to 50%, then at least half of the board to be independent. डन है दोस्तों? क्या बोलते हैं सत्यजीत? इसीलिए वो विकास है और मैं चिराग। दिस इज फाइन, गुड टू गो, परफेक्ट, दिस कवर्स एवरीथिंग। ज़्यादा एफर्ट्स भी लो ना तब भी इंसान को तकलीफ ही होती है। The board of directors are willing to appoint Rohan from 1st August 2024 for a term of another 5 years. नहीं है, valid नहीं है। Outline the tenure of independent director and minimum attendance as per IIAS proxy advisory. ठीक है, ठीक है। The SEBI LODR, हाँ जी, the SEBI LODR
states, the SEBI LODR states that the maximum tenure of IDs shall be as per the Companies Act 2013. Under the Companies Act 2013, no ID can hold office for more than two consecutive terms before having a cooling off period of 3 years. In those 3 years of cooling off period, the director cannot be associated with the company in any capacity. So the decision of the company for reappointing Rohan, who has already completed his 2 consecutive terms, is not valid. ठीक है, और भी कुछ पूछा था ना लोगों ने? Okay. The IIAS does not treat the following people as independent: directors who have been on board for more than 10 years
IIAS computes tenure retrospectively that is from appointment directors who have not had a cooling off period of 3 years executives who are on the board with their previous supervisors even if 3 year समझा क्या लास्ट वाला पॉइंट समझा ये कोई एग्जीक्यूटिव है जो अब वापस से बोर्ड पे अभी ये एग्जीक्यूटिव है जो अभी बोर्ड पे आ गया है तो इवन अगर उसका 3 साल का कूलिंग ऑफ हो भी गया है तो ये कौन सी पोजीशन पे खड़ा है एग्जीक्यूटिव क्या ये 149(6) के हिसाब से अभी भी डिबार हो जाएगा खत्म दैट्स इट दिस इज डन पल्ले पड़ा हनी ये बंदा 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड ले चुका है और राइट नाउ ही इज एन एग्जीक्यूटिव जो किन के साथ अपने ही प्रीवियस सुपरवाइजर के साथ काम कर रहा है एक बात बता अगर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन पे है तो क्या तू इसको आईडी बनाएगी अभी अपना 149(6) में तो 3 साल का सेपरेशन चाहिए होता है ना फ्रॉम एनी पोजीशन अटेंड ओ हाँ आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द पॉइंट minimum attendance 75% average 75% of 3 years दिया जो कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 10 इयर्स से है पर अगर वो 3 साल का कूलिंग ऑफ ले लेगा तो कंटिन्यूस पीरियड नहीं रहेगा ना 10 इयर्स का हाँ जी चलो बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट आंसर लिखूं तीसरा एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटेड टू द रोल ऑफ एनआरसी इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ डायरेक्टर्स पहला अपने को फंक्शंस ऑफ एनआरसी बताना है मतलब रूल्स ऑफ एनआरसी बताना है सेकंड है रोया बोल रही है कि बोर्ड रिपोर्ट में आपको एनुअल इवैल्यूएशन का फॉर्मल स्टेटमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है तो 2 आंसर्स करने हैं अपने को डन चलिए 2 आंसर्स लिख देते हैं
every listed company has to form NRC which typically performs the following functions. Which typically performs the following functions. Identify persons who are qualified to be appointed in the board. Recommend the remuneration policy to the board. Recommend policies as to evaluation of the board individual directors committee. Completely your choice, Savita. Of the board and directors helps in succession planning. बहुत है. As per ROA, it is not necessary to include in the board report the manner of evaluation, this contention of ROA is wrong. This contention of ROA is wrong.
this contention of Roya is wrong as it is mandatory for every listed company and every public company having paid up capital of 25 crore or above to include in its board report a statement indicating the manner as to how annual evaluation has been done. बोलो शेरो, क्लियर है? अच्छा देखो, अगर आपको अंडरलाइन करना है तो हाउ डू यू अंडरलाइन? ठीक है, board should have NEDs not less than 50%. If chairperson, executive director, 50% IDs. Chairperson NED, 1/3 IDs. Chairperson NED but related to promoter, half of the board ID. ये सब करना कब? जब टोटल आंसर्स खत्म हो जाए तब मार्किंग खेलना. इस मार्किंग में ना तुम्हारा टाइम निकल जाएगा. ठीक है. टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज, एटलीस्ट 6 डायरेक्टर्स. ठीक है. एट डायरेक्टर्स, no ID can hold office for more than 2 consecutive terms. So the decision of company is not valid. इसमें तो कुछ मार्क करने नहीं है. IIS average attendance 75% in the preceding 3 years. That's how you mark. हाँ, एंड में ही करना, पहले नहीं करना, जल्दीबाजी में मर जाएंगे, है ना. सर 6 मार्क्स के लिए बहु पर अपन ने मिस क्या किया? आवाज आ रही है? अभी गुड टू गो?
प्रॉक्सी एडवाइजरीज पूछा है क्या? पर इसमें प्रॉक्सी एडवाइजरी पूछा कहाँ है? पूछा नहीं तो मैं जबरदस्ती क्यों लिखूं? तुवाने में तो लिखा ना अपन ने, लिखा तो है सजेस्टेड बोर्ड साइज। हाँ, अगर तुम्हारी राइटिंग मेरे से भी गंदी है तो गैप दे ही देना, राइटिंग सही है तो मत देना। चलो, डन, आगे बढ़ेंगे। एनएससी प्राइम इज, अच्छा तुम बोल रहे हो इसमें 1A में, तो क्या है 1A में एक लाइन ऐड कर दो एनएससी के साथ, यहां पर फर्दर SES recommends a board size of, SES कितना 6-15 बोलता है, 7-15, SES कितना 6-15 बोलता था, कितना था SES में? छः 15 था ना SES, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, मोस्टली SES 6-15 ही था, 6 था ना, बहुत है। 6-15, और आपको चाहिए तो एक आध और IIAS ऐसा, बस इतना। और ऐसे कर सकते हो, $7.15 बस बहुत है। चलो आगे बढ़ेंगे। लास्ट, referring to the provision of Companies Act, examine the decision of the board to appoint ओजस as an additional director। क्या इसमें ओजस ने कुछ गलत किया है? यस, ओजस कैन नॉट बी अपॉइंटेड 1। पेनल्टी कितनी है इसकी? इफ आई मे नॉट बी रॉन्ग, इसकी पेनल्टी चलती है 2,000 रुपए आई गेस, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपए, 2,000 पर डे, मैक्सिमम ऑफ 2 लाख, राइट? चलो डन, पधारो, आ जाओ, लिख देते हैं जल्दी से। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, no person can hold the position of a director in more than 20 companies
at the same time. ठीक है, in the same time. Second, further the maximum number of public companies in which he can be appointed is 10. While counting the limit of public companies a private company which is a subsidiary of public company अभी स्टार्ट किया is a subsidiary of public company shall be treated as public company. Further, directorship in dormant company is not counted towards the total limit of 20. In the given case, Ojas is holding directorship in 8 public companies and 9 private companies, of which 2 are subsidiaries of public company. So in total he holds directorship in 10 public companies since
RCL is a listed company. He cannot be appointed as a director. If OJS is still appointed, then it shall be a violation punishable with a fine of rupees 2000 per day during the time he continues and subject to a maximum of 2 lakh. बोलो मेरे शेरो. पर हनी इसकी जरूरत नहीं थी ना. आई एम जस्ट कीपिंग इट टू द प्रोविजन. यार दोस्तों 3 और 6 की बात नहीं है, पर अब ये प्रोविजन तो लिखना ही है. मेरे हिसाब से 1 पेज में आ गया होगा तुम्हारा ये आंसर. ये तो मैं एक एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ, इसकी वजह से इतना बड़ा लग रहा है. बाकी तो 1 पेज में आ गया होगा तुम्हारा आंसर. अब इसमें से क्या हटाओगे ना तुम. डन है. आ गया ना इतने में. हाँ अब इतना तो लिखना ही पड़ेगा. वो तो मैं क्या थोड़ा बड़ा भी लिख रहा हूँ, स्क्रीन बड़ी है ना, ऐसे हो रहा है. ठीक है. सुनो ना, 1 मिनट का सूसू ब्रेक दोगे? बहुत जोर से आ रही है. 1 मिनट में वापस आया. आप कहीं मत जाइएगा. अगर आपको भी आ रही तो आप भी चले जाइए. आई विल बी बैक इन अ मिनट. कोई बात नहीं, अब नहीं आई तो क्या कर सकते हो. 1 नंबर कम मिलेगा या आधा नंबर.
दीक्षा यहां पर 10 हो गई है, ये 11वीं में अपॉइंट हो रहा है। आ जाओ 3 2 1 लेट्स गो। एक सेकंड, अभी तो क्वेश्चन रीड करना है। चलिए, As per 1st April 2024, the composition of board of directors of Kotal Limited, an unlisted company, 60 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, अनलिस्टेड है, 60 डायरेक्टर्स लेके बैठिए, ठीक है। अपहरण, शेष, युग, जीजा, आजाद, जॉन, सीना, आई मीन शेन, ओके। सो इसमें एक है एग्जीक्यूटिव, दूसरा वापस से एग्जीक्यूटिव, विमेन डायरेक्टर है नॉन इंडिपेंडेंट, और 4 है आईडीज, ठीक है, 4 आईडीज हैं। सो टोटल कॉम्पोजिशन है 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, 1 विमेन डायरेक्टर ऑब्वियसली नॉन इंडिपेंडेंट, 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में एक चेयरमैन भी है, 2 ईडीज हैं, एक चेयरमैन है उसमें से, और दूसरा एमडी है, ठीक है। तो चेयरमैन एमडी दोनों ईडीज है। द ऑडिट कमेटी कंसिस्ट ऑफ शेष, शेष मतलब एग्जीक्यूटिव, अपहरण, अपहरण इज एग्जीक्यूटिव, युग, जीजा विमेन डायरेक्टर, पर ये भी नॉन इंडिपेंडेंट है, और जीजा आईडी है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, नॉन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। The majority of the members of audit committee have the ability to read and understand the financial statement, but no one have accounting or related financial management expertise. In July 2014, the company went for IPO and got its shares listed on a recognized stock exchange. उन्होंने पूरा कंपनीज एक्ट के हिसाब से सोचवाया और एंड में सेबी एलओडीआर दे दिया। स्टेट हाउ द ऑडिट कमेटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड, वेदर द प्रेजेंट ऑडिट कमेटी कैन कंटिन्यू आफ्टर द लिस्टिंग, नो। आपको याद है यार, मैं आज ऑफिस से लेक्चर ले रहा हूँ दोस्त, आपको याद है कितना फुद्दू सा क्वेश्चन है। अपन ने ना CCMQ सीखा था, मैं आप मेरे कोई भी बैच से हो, ऑडिट कमेटी पर ने CCMQ सीखी थी। ऑडिट कमेटी में 2/3 आईडीज चाहिए, SR इक्विटी शेयर है तो सारे आईडीज चाहिए, मिनिमम 3 लोग होने चाहिए, चेयरमैन इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कुछ याद आ रहा है? तो ये कॉम्पोजिशन तो सही नहीं है, यहाँ पर 2/3 आईडीज भी नहीं है, चेयरमैन इंडिपेंडेंट भी नहीं है, सो दिस कैन नॉट कंटिन्यू। छोटा क्वेश्चन है, अननेसेसरी मेहनत बहुत ज्यादा करवाती रीड करवाने में, ठीक है ना? पक्का यहां तक सही है? एंड द CS टू बी द सेक्रेटरी, बहुत ही बढ़िया, मस्त। बी कर लेते हैं। ऑन May 1, 2024, सृजा who owns 3% equity shares in Crown Limited, सृजा के पास 3% शेयर्स हैं क्राउन लिमिटेड के, वॉज अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन द बोर्ड मीटिंग, ठीक है। वाह दीदी, आपको कहाँ बुलाया? किशोर को बोला तो सही मैंने, सुदीप को या किशोर कोई भी लेकर आ जाए। मैंने नहीं बोला ऐसा, ऐसे ही बोल रहा है वो। मैंने किशोर को स्पेशली बोला कि या तो तुम आ जाना, नहीं तो सुदीप को भेज दो, ये वापस ले जाओ, चलेगा। दीदी ये वाला ले जाएंगे, थैंक यू। मैंने नहीं बोला, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कहाँ है? हाँ जी, सृजा who owns 3% equity shares in Crown Limited was appointed as a director in the board meeting, ठीक है। सृजा के पास 3% है। The company was mainly into manufacturing plastic products, toys and had commercial agreement and business transaction with Chariot Limited, ठीक है। क्राउन का ट्रांजैक्शन है चैरिट के साथ फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये बाद में नॉलेज में आया कंपनी के कि सृजा के पास 1.5% है, अब चैरिट चलता है।
एंड हर हस्बैंड इज होल्डिंग 3% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सृजा के पास 1.5% है और हस्बैंड के पास 3% है। ठीक है। इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज टू डिस्कस अबाउट प्राइस रिविजन। उनको प्राइस में रिविजन करना है फॉर द रॉ मटेरियल प्रोक्योर्ड फ्रॉम चैरियट with reference to Companies Act. Answer: whether Struja should make a disclosure of her interest in Chariot Limited, assuming that the company is going to have transaction with the said company on a continuous basis. If yes, when and what frequency can she vote in the price revision? ठीक है, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो क्या होगा। ठीक है, कोई नहीं, आ जाओ दोस्तों, अभी इधर ध्यान दो जी। इसके अंदर क्या होगा थोड़ा सा समझना। दो डिस्क्लोजर रेजिम्स है आपने जो आज तक पढ़े हुए हैं। डिस्क्लोजर रेजिम 1 है कि जब कभी भी एक डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो वो अपने अपॉइंटमेंट पे, जब कभी भी एक डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो वो अपने अपॉइंटमेंट पे डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट करता है। दैट इज एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, MBP 1 में डिस्क्लोजर होता है। सेकेंड, वेन एवर देर इज अ चेंज, उसके बाद हर चेंज के बाद जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें डिस्क्लोजर करता है। और तीसरा, एट द स्टार्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर डिस्क्लोजर करता है। तो ये तीन चीज़ें तो आपने डिस्क्लोजर्स पे डाल दी। 1 सेकेंड चीज़, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है विथ एनी कंपनी इन विच ये डायरेक्टर अलोन या फिर अलोंग विथ अदर डायरेक्टर्स होल्ड करता है 2% या उससे ज़्यादा ऑफ द शेयर्स, तो आपको ये बताना भी होगा और रिफ्रेन करना होगा। बट टेक्निकली यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। शी इज़ नॉट होल्डिंग 2% ऑफ शेयर्स अलॉन्ग विद अदर डायरेक्टर्स के साथ उसके पास 1.5% ही है, तो टेक्निकली ये वाला रिस्ट्रिक्शन वो हिट नहीं करती है। बट एज अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस, क्योंकि उसके हस्बैंड के पास 3% शेयर्स हैं, तो इनडायरेक्टली उसके पास 4.5% शेयर्स हैं, तो शी शुड मेक अ डिस्क्लोजर इन द बोर्ड मीटिंग अबाउट द टोटल होल्डिंग एंड शी शुड रिफ्रेन फ्रॉम द वोटिंग ऑफ प्राइस रिविजन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तीसरा है, ट्रांसपेरेंसी इज अ पिवोटल फीचर इन मार्केट बेस्ड मॉनिटरिंग ऑफ कंपनीज एंड इज सेंट्रल टू शेयर होल्डर्स एबिलिटी to exercise their ownership right on an informed basis, which can help attract capital and maintain confidence in the capital markets. ठीक है। Adequate disclosure by corporates are mandated under Companies Act, SEBI, LODR. In this background, state the disclosure requirement in listed companies website. ठीक है। Financial statement and other disclosures, आपको financial statements में कैश फ्लो स्टेटमेंट बताना है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना है। इस कंसोलिडेटेड में सब्सिडरी अगर आउट ऑफ इंडिया है तो उसका भी डेटा देना है, अगर वहाँ पर ऑडिट कराना ज़रूरी नहीं है तो उसका अनऑडिटेड डेटा देना है, अगर वहाँ पर स्टैंड अलोन बनाना ज़रूरी नहीं है तो उसका कंसोलिडेटेड डेटा देना है। बट ये आपको उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट अप, विजिल मैकेनिज्म, दैट यू हैव सेट अप अ विजिल मैकेनिज्म और उसकी पॉलिसी वेबसाइट पर डिस्क्लोज्ड है। एक्सेप्शनल केसेस में ऑडिट कमेटी के चेयरमैन के पास एक्सेस अलाउड है। विसिल ब्लोअर को हमने एडिक्वेट प्रोटेक्शन दिया है फ्रॉम विक्टिमाइजेशन, वो आप अपनी वेबसाइट पे बताते हैं। और एनआरसी में पॉलिसी फॉर इवैल्यूएशन, पॉलिसी फॉर रेम्युनरेशन आपको डिस्क्लोज करना है। तो बहुत ही अच्छा गिफ्टेड क्वेश्चन हो गया आप लोग के लिए। नहीं, अब लिखो ना उसमें डिस्क्लोजर नॉट रिक्वायर्ड बट एज अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस दे शुड। बाकी बाय गोइंग बाय द लॉ तो जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया नवनीत, ये तो अपन ने रटे थे यार अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 के तीनों क्लियर है। चलिए लिख देते हैं क्वेश्चन 2। ओबे कॉफी लाइए, हाथ जलाने के लिए लाइए, ये तो नाराज हो गई, थूक के आइए कॉफी में। चलो, ठीक है।
2A। अगर एग्जाम में बहुत भूख लग रही है मतलब तुम पास हो, ये बात तुम्हें पता है ना। अगर तुम्हें एग्जाम के पीछे भूख लग रही है तो तुम पास हो, क्योंकि भूख का मतलब है दैट योर ब्रेन इज वर्किंग फाइन, इट्स यूजिंग इट्स कैलोरीज नाइस, एंड द ब्रेन थिंक्स एवरीथिंग इज इन कंट्रोल एंड हेंस यू फील हंग्री। अगर पेपर फाड़ू आया ना तो तुम्हें भूख नहीं, तुम्हें टट्टी लगेगी। अगर टट्टी लग ले तो समझ जाना कि फट गई अपनी। पेपर हाथ से निकल रहा है, दिमाग को समझ में आ गया है, दिमाग अब अपना एस्केप ढूंढ रहा है जहां वो सबसे अच्छा सोचता है, और वो है टट्टी की टाइम। थैंक यू। तो चलो अपन लिखते हैं अपना आगे। ये तो रील मटेरियल था यार। In the given case, Cartel Limited, in the given case, Cartel Limited were itself listed in the year 2024 as per regulation 18 of SEBI LODR, the composition of shall be it should have minimum of 3 directors, at least 2/3 of the committee to be consisting of IDs, and in case of SR equity shares, all IDs. Chairman to be an independent director. D. All members to be financially literate and at least one member should have
financial management expertise. In the given case, the audit committee of Carter Limited is not proper as A. The chairman, that is Sage, is an executive director and the company requires an ID. Next up, they have only one ID, that is Jija. In the audit committee. Here they need to have at least 2/3 IDs एक और प्रॉब्लम, no member has financial management expertise. डन दोस्तों, लिख लिया। पर पहले कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्यों लिखना है? दे हैव लिस्टेड देमसेल्व्स। उसने कहाँ पूछा ना कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से सही है कि नहीं। डन है? यस, बिल्कुल कर सकते हैं अनन्या। Let's start with another question. क्राउन और चैरिट वाला। डिस्क्लोजर्स,
प्रियंशी मत लिखना ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म्स, बट ठीक है, आईडीज कितनी बार लिखोगे ना, तो एक बार आईडी लिखकर ब्रैकेट में आईडी लिख, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिख के ब्रैकेट में आईडी लिख देना। The given case pertains to the provision of disclosure of interest by a director. Under the Act, there are two types of disclosures. A, disclosure of interest in any company or firm at the time of appointment as a director. Second, first board meeting every year. Whenever there is a change, next board meeting. Next board meeting. Disclosure of interest in any contract or arrangement with any company, where she alone or along with other directors holds 2% or more of the shareholding. This disclosure should be made in that board meeting where the matter is being considered and the
Director should refrain from participating. ठीक है. Now एक मिनट. In the given case, सूरजा, क्या नाम है उसका, सुरुजा, must make a disclosure of interest in form MBP1 at the time of her appointment for second disclosure she is only required to disclose when she alone or along with other directors holds 2% or more. However, since her husband holds 3% of the shares, then indirectly they cumulatively hold 4.5% of Chariot Limited, and going by the legal spirit, she must make a disclosure of the same in the meeting held on 6th July 2024 and should refrain from voting. बोलो मेरे शेरों, समझा क्या? मस्त आंसर है यार. जमा
ये पेपर बहुत लेंदी है एक्चुअली, काफ़ी लेंदी है। डन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हल्का था, डिस्क्लोजर्स। Under SEBI LODR, website disclosures for the following matters must contain एक सेकेंड ना, financial statements and other documents. No, Dhoni, it won't, but then, yeah, it's okay. If you don't write it, it's okay. Consolidated financial statements, standalone financial statement, cash flow financial statement, cash flow statement, I'm sorry, note, if the subsidiary it's outside India, not required to have audited financial statements or not required to maintain standalone financial statement then the requirement is deemed to be met even if whatever they are required to make is hosted
on the holding company's website. Visual mechanism. The company has established visual mechanism has adequate safeguards against victimization of witness that no person was denied access to the chairperson of audit committee. और क्या बताना है इनको? NRC. Nomination remuneration policy. Policy for याद है क्या? Determining the positive attributes याद है क्या? Qualification. Policy for determining independence. Remuneration policy. Succession plan. खूब है. हाँ जी शेरो, बताओ. डन है? Done writing? You got to add of Russian language. I like it. प्रभु तुम्हारे साथ है. सही जा रहे हो तुम. अच्छा, ये 3 का सेट हो गया ना. चलो क्वेश्चन डिस्कस कर लें. हाँ जी. Mihun Textiles is a textile manufacturing company based in Tamil Nadu. The company has been on a growth trajectory due to savings in operating costs and increased demand for its product.
The financial performance of the company has been on a positive trend since last 2 years. ठीक है. It is also spending towards CSR as per the requirement of Companies Act. The management of the company is informed by the CS that there are new compliances with regards to impact assessment. The management reaches out to you to help with the detail of compliances. In the light of provision of Companies Act, read with rules made thereunder, prepare a brief note. A brief note मतलब normal answer. फालतू को भी कंफ्यूज मत होना इसमें बैठ के, ठीक है ना. टाइम पास करते हैं लोग ऐसे ही. हाँ जी, brief note. Note is as like a suggestion. When is the company obligated to undertake impact assessment? Average 10 crore का impact assessment in the preceding 3 years. Second, 1 करोड़ से ज़्यादा का आउटफ्लो किसी एक प्रोजेक्ट में. तीसरा, 1 साल कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट में, आपका पैसा लगाए हुए हैं, तब इसमें इम्पैक्ट असेसमेंट होता है. दिस इज व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू हैव इम्पैक्ट असेसमेंट. व्हाट इज द सीलिंग फॉर एक्सपेंडिचर ऑन इम्पैक्ट असेसमेंट? 2% or 50 lakh, whichever is higher. Whether impact assessment report shall be placed before the board and next to the annual report? Yes, it has to be attached in the board report, right? ठीक है, काफ़ी सिंपल है, जल्दी हो जाएगा ये वाला आंसर. बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आ जाओ. A well planned data governance framework covers strategic, tactical, ये क्यों देते हैं data governance क्वेश्चन, and operational roles and responsibilities, and ensures that data is trusted, well documented, easy to find within your organization, and it's also easy to keep secure, compliant and confidential. Outline the pillars of data governance. एडवांटेजेस तो ठीक था, पिलर्स तो क्या कुछ भी बना दो. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. और नेक्स्ट है, त्रिकुलम ग्रुप इज अ वेरी फेमस कॉन्ग्लोमरेट बेस्ड इन चेन्नई, famous for its silk sarees and other clothing. There have been internal conflicts within the family members who were part of the ancestral business. A dispute arose between the children of 2 brothers, with TVK, elder brother on one side, and rest of the family members on the other side. Vani, a New York-based scientist and TVK's elder sister's daughter, had sought a board seat in Triculum Investments, the holding company of the Triculum Group. She accused the family of denying her a seat as to her gender and was planning to approach the court for the rights. Highlight some of the challenges faced in family businesses. यही है nepotism. ये तो आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन लगता हो, ये आपको विकास ने पढ़ाया चैप्टर, challenges of family owned business. ठीक है, quite a neutral question. 3A अच्छा है, the only question which I didn't like is 3B. 3C अच्छा है, कोई ऐसी खासी तकलीफ नहीं है. ठीक है, सो एक मिनट गाइस, कोई बाहर मिलने आया है, सिर्फ मुझे 1 मिनट का टाइम देना. आई बी, बस मैं इनको जाके मिलकर मना करके आता हूँ कि हम बात नहीं कर सकते. 1 मिनट वापस आता हूँ, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मिनट. थोड़ा एडमिशन का टाइम है ना, मिल के मना करना पड़ता है, वरना तो मैं गेट आउट बोल देता.
चलो 3 to 1 एक्शन. Three A. Every company having an average CSR expenditure of 10 crores or above in the preceding 3 years shall undertake impact assessment. Impact assessment is done only for those projects which have an outlay of 1 crore or more and which have been complete not less than 1 year before impact assessment. तीसरा, the ceiling of expenditure upon impact assessment shall not exceed 2% of total CSR expenditure or 50 lakhs, whichever is higher. It should be placed. Impact assessment report must be placed before the board and shall also be attached
to the annual report. लिख लिया शेरो? ठीक है, चलो फेंकते हैं. Data governance ensures that data is true, well documented, secured, and easy to find whenever required, सर ये आंसर 5 नंबर के साथ. अरे एक सेकेंड, तुमको अभी तक की बात समझ क्यों नहीं आ रही? आई डू नॉट राइट आंसर बेस्ड ऑन 3, 4, 5. इसके अंदर क्या कंटेंट मिसिंग है? अब क्या ड्राइंग बनाओगी क्या? मुस्कान को ऐसे खड़े कर दोगी CSR करने के लिए? समझो ना, 3, 4 नंबर के हिसाब से मत देखो. हमने पूरा कंटेंट डाल दिया है. इक्का दुक्का लाइन लिखते लिखते तुम भूलोगे, कुछ भी नहीं कर सकते. जैसे अभी मैं ये देख रहा हूँ तो इसमें मेरे को एक और चीज लिखनी चाहिए थी, दैट इम्पैक्ट असेसमेंट इज डन बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी. तो अब और क्या लिखोगी ना तुम? अब इसमें तांडव थोड़ी करेंगे अपन. ठीक है, आ जाओ. Data governance ensures that data is true, well documented, secured, and easy to find whenever required. Few advantages of having data governance framework. It ensures the data quality and accuracy, makes the data easily एक्सेसिबल. तुम नोटिस करके देखो तो मैं ऊपर वाली डेफिनेशन को ही एडवांटेजेस में वापस से तोड़ मरोड़ के लिख रहा हूं. Keeps the data secure,
confidential, appropriate segregation of data, allowing it readily available for different individuals. Allows easy understanding of complex data. बहुत है, इससे ज़्यादा फायदे भी नहीं जो मैं ज़बरदस्ती बना रहा हूँ. ठीक है. There are three pillars of data governance framework are तुमको पिलर्स में याद आ रहा है क्या? मैं तुमको एक बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच सिखाया था, याद है कुछ? बॉटम अप टॉप डाउन अप्रोच, वो है पिलर्स. हाँ मतलब पिलर्स में वही लिखना है अपने को. आ जाओ इसमें. as the users of data keeps on increasing, as the users of data keeps on increasing, making only few people accountable for data governance is not right. Hence, a decentralized bottom-up approach is the better way. Second, data governance as a practice must be embedded in the
daily workflow. Data governance should take into account the needs of all users as well as the way as to fulfill the data needs. खत्म, बन गए फ्रेमवर्क. डन है. ठीक है, तीसरा तो सिंपल ही है. ठीक है. Some of the challenges which governance issues in family businesses. In the present case of three-column group, which is a family owned business, following are the issues it may face. चलो, ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा. एक मिनट, पानी पी लूँ. Creditors do not trust much upon family owned businesses as it is more prone, बेटा prone लिखा है, more prone to abuse by the joint actions of the family members, more prone to conflicts in management as
the family members have diverse opinion external talent may be neglected. External talent may be neglected. Succession planning might not be done on an objective basis. That is not on merits, rather on relations. Generation gap, that is change of mindset. Not all members may be competent, yet they will get chance of appointment leading to a risk for future sustainability. एक मिनट, मैं गेट बंद करके आ रहा हूँ. हाँ, दिस इज डन. डन है दोस्तों. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकते हो, चलेगा. यहीं ऐड कर लेना कहीं पे. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकते हो. चलिए, फोर और 4A. ठीक है. ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ एम्प्लॉइज. बी में क्या पूछा है? बोर्ड अकाउंटेबिलिटी ऑन ESG एक सिंपल है. स्टैंडर्ड एथिकल प्रैक्टिसेस व्हाट अ बिजनेस शुड अडॉप्ट. और में क्या है? कंटेंट ऑफ IC. ये ज़्यादा सिंपल है. फर्स्ट एक ये क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल है 4A1 का. सेकेंड, व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट? रुई, पैड. व्हाट इज E-waste एंड मेजर्स टू रिड्यूस E-waste. पुराने ट्रांजिस्टर कैसे उसको कम कर सकते हैं? स्टॉप बाइंग न्यू, ट्राई टू रिसाइकल, डोंट थ्रो इट, गिव इट टू समवन एल्स, जिसके लिए ये यूजफुल हो जाए. ये ज़्यादा सिंपल है. ओ भाई 4B करते हैं, ये 4A करते हैं. दिस इज सिंपल. 2 ही क्वेश्चंस है प्लस सस्ता है. 8 और 7 टाइम भी बचता है.
4A करते हैं, 4A इज फास्टर। चलिए रीड कर। अच्छा एक सेकेंड, तुमको मेरी स्टाइल समझ में आई मैंने क्या किया वाइल सेलेक्टिंग दिस क्वेश्चंस। अभी देखो टाइम कम है, मेरे को बैठ के 4A पूरा रीड करने में काफ़ी टाइम लग जाता, ठीक है, अभी 1.5 पेज है। तो मैं क्या करता हूँ, जब कभी भी अगर मैं बहुत से लेट हो रहा होता हूँ ना, तो ये सिंपलेस्ट वे मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन के एंड पे आ जाता हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन के एंड पे चले जाओ, उसमें तो लिखा ही होगा क्या चाहिए, तो मैं खाली ये देख लेता हूँ कि क्या मेरे को एंड का पार्ट जम रहेगा, मतलब क्वेश्चन में जो पूछना है वो मेरे को जम रहेगा। अगर वो जम रहा है तो फिर मैं ऊपर वाला रीड करूंगा, और नहीं जम रहा है तो मैं नहीं करूंगा। यहाँ पर मेरे को एंड के पार्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन ही समझ में आ रहा है कि इन लोगों को क्या चाहिए मुझसे, सो इट सेव्स माई टाइम। तो कल अगर आप एकदम से फंस जाओ तो लास्ट रीड कर लो, और अचानक से आप फाइनल कर पाओगे कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। ऑल्दो अपनी स्ट्रैटेजी ये कहती है कि पहले क्वेश्चन पेपर रीड करो, बट देन अगर कभी ऐसा हो जाए तो ये एंड पार्ट रीड कर लेना, इट शुड गिव यू फेयरली 99% आइडिया कि वो क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली इसमें 2 ही आंसर करने हैं 8 और 7 में, तो दैट सेव्स अ बिट मोर ऑफ माई टाइम, ऑल्दो क्वेश्चन 3 ही है ये भी, बट ठीक है, ठीक है। सो जस्ट अ सजेशन, यू कैन प्ले अराउंड लाइक दिस। चलो एक सेकंड पहले रीड कर ले क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एंड का रीड करके बाकी पढ़ो ही नहीं, कुछ तो काम का होगा। अमय has recently joined a regional sales manager of pharmaceutical company. He has been given a sales target for the year, which is usually high as per his assessment. ज़्यादा टारगेट दिया है। On surveying the market, however, he observed कि जो competitors हैं ना वो अपने targets achieve कर रहे हैं। On a deeper analysis, he comes across unethical practices of giving gift, payment and hospitality benefits to doctor by their medical representatives. This is prohibited by the Uniform Code of Pharmaceutical Marketing. ठीक है। Amay is unwilling to follow the same tactic and contacted the national sales manager in this regard, Chapla. But he hinted that achieving the release target at whatever cost, he has no other option but to carry out instructions, and directed the area sales managers to meet their respective targets while engaging in practice of unethical incentives to the doctors. Amay met his friend Arur, a company secretary, and in the course of conversation he was mentioning about the unethical practices he was witnessing regularly in his job. He inquired with Arur if there is something similar which he encounters. Arur told that he is required to follow ICSI Anti-Bribery Code. फालतू पूरा टाइम वेस्ट। अच्छा ICSI Anti-Bribery Code आपको याद है क्या? हाँ जी, एनीवन? चापला इज चापलूस, फालतू के नाटक है ना। चलो आ जाओ। सो हाँ जी, ICSI एंटी ब्राइबरी कोड याद है? इट इज़ अ कोड अप्लाइड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। यू शुड कंप्लाई विथ ऑल द नेशनल लेजिस्लेशन। सेकेंड, bribery in private sector, no one should be giving bribery. No facilitation of payment, यानी कि काम कराने के लिए आप पैसे नहीं दोगे। पॉलिसीज ऑन गिफ्ट, नॉट टू एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम आउटसाइडर्स। याद आ रहा है कुछ? अपन ने कंटेंट एलिमेंट पढ़े थे, तो ये अपने को इसमें लिखना है कंटेंट एलिमेंट। John Sevo have recently completed their MBA from Manipal University and were working on various ideas for startups. During the research, they noted that many Indian cities are facing major problem of biomedical waste. अच्छा, John sell करेंगे biomedical waste. Huge volume of waste has meant that landfill sites are facing problem of overcapacity. On the other hand, the waste to energy plants construed to solve the problem are also facing flux due to their inefficiency and release of poisonous pollutants. हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। Yes honey, perfect. The manner of biomedical waste disposal is identified as one of the reason behind this problem. They were planning to develop solution using technology to address biomedical waste. In one of the conversations, Sevo mentioned to John, due to technology and use of gadgets, e-waste is also going to be a challenge in the future. They were making a pitch for one of the investors proposing solution. What is biomedical? अच्छा, बायोमेडिकल वेस्ट तुम सबको पता है क्या होता है, ठीक है ना। पैड, रुई, दवाई का कुछ भी हो गया, हाथ पांव अंग कोई काट दिया। वेरियस अप्रोचेज यूज्ड फॉर डिस्पोजल। वेरियस अप्रोचेज याद आ रहा है क्या तुमको? इंसर्नेशन सिखाया था मैंने आप लोगों को, स्टेरिलाइजेशन सिखाया था, कुछ याद आ रहा है? वो बहुत ज्यादा गर्म करके उसको खत्म कर देना। ऑटोक्लेविंग, जस्ट इन केस अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। ई वेस्ट क्या होता है, ठीक है। एंड मेजर्स टू रिड्यूस ई वेस्ट, इसको अब सिखाने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिखाई देता हूँ। स्टीमिंग, बहुत ही बढ़िया। इंसिनरेशन, परफेक्ट।
चलिए तो लिख देते हैं जल्दी से दोनों आंसर्स। नंबरिंग सही करना, नीड नॉट टू से यू गाइस आर ब्रिलियंट, बट गलती नहीं करना, नंबरिंग ज़रूर करना। ठीक, कंटेंट ऑफ ICSI एंटी ब्राइबरी कोड। The ICSI issued the anti-bribery code which is to be applied on a voluntary basis and ensures that neither the company nor its employees or any connected person enters into cases of bribery. Enter into cases of bribery. Following are the contents. Following are the contents of anti-bribery code. Clause 1, adherence to anti-corruption laws. इसका मतलब क्या था? The company must follow all the anti-corruption laws of India. Clause 2, bribery in private sector. The company and its employees should not involve into bribery facilitation
पेमेंट्स भैया एक और कॉफ़ी दिलवाते क्या? सुनो ना, दीदी को मत भेजना, इतना कहाँ चल के आएगी, आप या फिर सुदीप में से कोई आ जाना। क्लॉज 4 और क्या है? ब्राइबरी इन फॉरेन पब्लिक ऑफिसेस। To get its work done faster. Company must have a policy on accepting of gifts and hospitality. The same should be duly approved by board. Last. डन है दोस्तों?
What is biomedical waste and various approach for disposal of biomedical waste? ठीक है. Biomedical waste is any kind of waste. Yes, Sudeep, finally काम कर रहा है लौंडे. Is any kind of waste generated. कोस्टल ले जा, ये ले जा और ये वाला. थैंक यू. कहाँ घूम रहा था? नीचे नहीं था क्या? पहले दीदी को क्यों भेज दिया? पहले दीदी को क्यों भेज दिया? मैंने पिछली बार भेज दिया ना. ठीक है. अब बायोमेडिकल वेस्ट इज एनी काइंड ऑफ वेस्ट generated during the diagnosis treatment of any human being or animal. एक मिनट आया दोस्तों, एक ही सेकेंड. ठीक है. Biomedical waste is any kind of waste generated during the diagnosis, treatment of any human being or animal. These needs to be disposed of properly as they are infectious and toxic. Following are the approaches which can be used. Following are the approaches which can be used for effective disposal of bio-waste. ए होगी incineration, एक मिनट दोस्त, I'm just getting a call. एक ही मिनट.
हाँ जी दोस्तों, सो सॉरी आई हैड अ कॉल। बस मैं आ गया। पधारो पधारो पधारो। तुम क्या टाइम पास कर रहे हो? कॉफ़ी की सुविधा होनी चाहिए जी। पधारिए। सो सबसे पहले हो सकता है इंसिनरेशन। In this, it disposes of the waste. In this, it disposes of the waste effectively by burning them with high temperature. दूसरा हो सकता है इसमें माइक्रोवेविंग। In this, the waste is first mixed with water and then heated to kill the microorganisms and is considered a more energy efficient approach than incinerating it. तीसरा होगा ऑटोक्लेविंग। It is a sterilization process which uses high steam pressure in order to kill all the microorganisms. Use of chemicals to deal with liquid bio wastes. और क्या चाहिए था इसको? ई वेस्ट क्या होता है? E-waste in simple means
electronic wastes or those electronics which are now unwanted, not working, or are towards their end of life. The measures to reduce e-wastes are reduce the purchases. वाह क्या सलाह दी है मैंने, खुद को चूमने का मन करता है. Reduce the purchases and further avoid buying those electronics which are not capable of being reused, which are not capable of being reused. B, डोनेट. और अगर तू भिखारी है और रीसेल it to those, donate or resell it to those organizations which can either use it or recycle it, thereby reducing e-wastes. Wherever possible, shift from physical, not relationships, from physical hardware, shift from physical hardwares to software like cloud storage, thereby reducing e-waste. ठीक है, बहुत है. एक आध कोई और ध्यान है तो ऐड कर सकते हो तुम. चलो एक और लिख लो.
खूब है, डन है, कंप्लीट। नाउ 4.2 आ जाओ, पहले क्वेश्चंस देख लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिस्क मैनेजमेंट? मेक अ रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्लान, रिस्क एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मिटिगेशन, सब इन्हीं का तो काम है। पॉलिसी बनानी है, सीआरओ अपॉइंट करना है। द सीआरओ एक्सेप्ट्स दैट कंपनी हैज डन लिटिल टू प्रिपेयर फॉर द क्राइसिस। व्हाट टाइप ऑफ क्राइसिस इज एचएसएल करंटली एक्सप्रेसिंग? ठीक है, तो इसमें मेरे को टाइप ऑफ क्राइसिस पता लगानी है एंड ऑल्सो नरेट अदर क्राइसिस। क्राइसिस याद है क्या? वो टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस, रूमर, कन्फ्रंटेशनल क्राइसिस, नेचुरल क्राइसिस। तो सेकंड भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाट इज बीसीपी एंड इट्स कंपोनेंट्स। हाउ? ये तो तुम ऐसे ही कर सकते हो, सॉफ्ट पीए। To protect against malicious threat or building a secure infrastructure for data storage for SL, outline cyber risk management process. Cyber risk management, risk identification, analysis, assessment, mitigation, monitoring, खत्म। बस इतना ही है। तुम्हारा लास्ट चार्ट यही बनाया होगा मैंने। सही है, बहुत ही सिंपल है यार ये तो। क्वेश्चन 5A तो मुझे देखने की भी जरूरत नहीं लगे इसकी बार, ये तो बड़ा भी है। रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन रिस्क मैनेजमेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रिस्क ऑफ गवर्नेंस रिस्क क्या होता है वो बताना है यहाँ पर, ठीक है, ये भी सिंपल है। एक्सप्लेन इंटरनल कंट्रोल एंड डिफरेंस बिटवीन रिस्क मैनेजमेंट इंटरनल, ये भी सिंपल है। लिस्ट द गाइडलाइंस विच द कंपनी शैल फॉलो टू स्टैब्लिश गुड क्राइम, दोनों तरफ ही सिंपल है। टेक्निकली दोनों तरफ के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। दोनों तरफ ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अपन पहले वाला कर लेते हैं सिंस यू हैव डन इट इन डिटेल। ओके, आप जब तक सिर्फ इसका ये हेड मतलब 5 रीड करोगे, अलाउ मी अ लू ब्रेक, आई विल बी बैक इन अ मिनट एंड देन वील डू दीज 4 क्वेश्चंस फट 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 झट बट फटाफट। आई टोल्ड यू रे पहले भी, जल्दी से रीड कर लो, 1 मिनट में आ रहा हूँ वापस।
भाइयों, स्मृति मंधाना की शादी टूट गई। पहले कह रहे थे फादर की तबीयत खराब है, अब सुनने में आ रहा है कि बंदे ने चीट किया। इतना बढ़िया क्रिकेट खेल रही थी और ये अलग खेल गया। हाँ भाई, कौन है वो? औरत ही औरत की दुश्मन होती, सांप कहीं की। जिस टाइम तूने विकास की राइटिंग गंदी बोली थी तभी मुझे समझ गया था कि तुझ पर विश्वास नहीं करना है। और अब तू स्मृति मंधाना को नहीं जानती। बस बस चल। अभी पर उन लोगों ने शादी इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दी और उसके लड़के की एक वो भी आया है, चैट भी आई है। हाँ, लड़के पता नहीं क्यों इजीली चीट कर लेते हैं। हाँ, लौंडा लौंडे कोई पप्पी दे रहा है ना जाके। देखो तो कैसे लड़कों पे इल्जाम लगाता है ना, मेरे बहुत खून खोलता। चलो ठीक है, आ जाओ। हमें क्या करना, हम तो वैसे ही बर्बाद हैं। चलो चलो यार, अपने नहीं रोना धोना करना ही है। नहीं, वो डैड की तबीयत खराब इज अ कवर अप। चलो, दामाद ऐसी हरकतें करेगा तो ससुर को अटैक तो आएगा ही ना। ठीक है, ओके। हार्डवेयर सॉल्यूशंस offer to its client hardware solutions. Wow, so realistic. It's like Vijay sales. They sell, including chip manufacturing and planning and integration of variety of uses. In a recent concluded board meeting, while reviewing risk management practices, one of the board members indicated about the increased threat of new, severe, non-financial risk, which are now challenging basic assumptions about control effectiveness. For example, HSL so far has relied on automation to speed up process, lower the cost, reduce manual errors. At the same time, the risk of large-scale breaches, violation of data privacy have increased dramatically. Okay, यहाँ आंसर है अपना। Risk of large-scale data breaches and violation of data privacy during COVID-19 crisis, as digitalization has accelerated, with less risk of manual errors but greater risk of large-scale failures, HSL will require to adjust their risk appetite and associated control to reflect evolving risk profile. The CRO agrees with the view of board member. He informed the board that risk management strategies require revision to cover major breakdown so that HSL is able to swiftly switch quickly to crisis response mode. He further agreed that HSL has done a little to prepare for crisis, seemingly increasing an attitude that it won't happen here and hence risk culture also need to be improved. ठीक है? There is a consensus that HSL will need to build crisis preparedness, as the COVID-19 crisis has demonstrated companies with well-rehearsed approaches to manage through a crisis have been resilient to shock. ठीक है? The CRO further briefed that board that preparation in respect of would involve identifying the possible scenarios, mitigating strategies to adopt before a crisis hits. That includes periodic simulation involving both senior management and the board. There is a plan to maintain and periodically update a detailed crisis management register. Their strategies would typically include details on when and how to escalate issues, pre-selected crisis leadership team, pre-selected crisis leadership team, resource plans, and roadmaps for communicating and broader stakeholder stabilization. The internal auditor has also pointed out several control weaknesses, recognizing risk appetite, not appropriately recognizing risk appetite. In the background, answer the following. ठीक है, फालतू ऊपर पढ़ना भी नहीं चाहिए था. This is the technological crisis. बिल्कुल सही है.
डन दोस्तों। ठीक है, फ्रॉम द कंपनीज एक्ट एंड सेबी रेगुलेशन डिस्कस इन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है दोनों में। As per the Companies Act 2013, following are the responsibilities of board regarding risk management. They have to form a risk management policy. They have to form a risk management policy and have to provide a statement in the board report regarding the development and implementation of risk management policy. They are required to inform the same throughout the company. They are required to inform the same throughout the company about how risk is identified, analyzed, and mitigated. एक मिनट
Further, under SEBI LODR, following additional responsibilities are given. A. Appointment of Chief Risk Officer every listed company must have a risk management committee हो गया ना और कुछ रहा क्या The audit committee should oversee the overall functioning of the internal control system as well as effectiveness of risk management process. बहुत बढ़िया बस बहुत ही लास्ट था टू डिस्क्लोज द risk management policy on its website. That's it. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं The CRO accepts the company has done little to prepare for crisis. What type of crisis HSL is experiencing? And also narrate other types of crisis. 5B. Following other types of crisis which a company may encounter. A crisis may happen because of wrong steps. हाँ सप्लीमेंट का टाइम आ गया taken by a firm rumors
some competitors in order to win make false accusations which might damage company's reputation. Confrontational crisis. Different department and people of different mindsets may be seen in an organization and many times they may clash because of different ideology, culture, or beliefs. एक और क्राइसिस डाल दो. Technological crisis. If technology is used improperly, it shall have negative effects much more than the positives. Data breach, malware are certain examples. बस ये हो गया. In the current case, HSL is experiencing a technological crisis. बोलो दोस्तों, यहाँ तक समझा? बोलो सरकार, यहाँ तक समझा? मैम शीट.
Explain BCP and its components. Very direct question. BCP is a document. BCP is a document that outlines how a business will continue its operations if any unplanned disruption occurs. So it focuses on prevention, and if it can't be prevented, then for recovery. A BCP can be tailored as per the department at risk and type of risk. Following are the components of BCP. याद है क्या वो? अगर आपको याद हो तो मैंने इसमें सोफा पे याद कराया था. सोफा याद है क्या? स्ट्रैटेजी, object is to find out and plan for those activities which are critical for the business to continue its operations. SOFA, organization. The second component is to find out the skills required to continue the above identified operations and
the structure to be maintained and the structure to be maintained to allow the organization to continue its working. Sofa, FS facilities, the object is to provide a recovery site for the data in the event the primary site is destroyed. So for application, object is to identify those applications and softwares which are critical for organizations to continue its operations. So for pay, the object is to identify the necessary processes in order to allow the business to run properly. लिख लिया शुरू कवर्ड है सब कवर्ड है सर ठीक है साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस आइडेंटिफाइंग एनालाइजिंग इसमें ये थोड़ी बोला साइबर रिस्क मैनेजमेंट समझाओ साइबर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस डायरेक्ट बताना है following are the steps for creating an effective cyber risk
management process. A, risk identification, identify the risk that might compromise the cyber security risk analysis analyze the severity of each risk by assessing how likely it is to occur and its impact. याद है अपन लोग रिस्क एनालिसिस में यही लिखते थे. तीसरा रिस्क असेसमेंट. ये ब्रो 15-20 मिनट और बस. बोल दिया मैंने ऑलरेडी कि मैं मुस्कान को बोल दूंगा कि 15-20 मिनट लेट चला है. हाँ, मतलब उनको हाँ कि आज मत लो, कल लेना. नहीं कि लोग ही नहीं फिर. हाँ, इसलिए हम पूछ लिए. एक मिनट. ओए लाइव वाले बच्चों, यू वांट मी टू टेक मुस्कान मैम लेक्चर ले कि नहीं ले? आ जाओ. कंपेयर द रिस्क. हाँ बता देंगे ना. मैम बोल रही है कि शी इज विलिंग टू टेक बट इफ यू आर टायर्ड शी कैन let go of you. Compare the risk against the risk appetite. 5-10 मिनट का ब्रेक दे देना बस. तो 6:30 स्टार्ट कर दे. पूछो. 6:30 स्टार्ट कर दे मैम, चलेगा? ले लो मैम. ले लेना. सभी बोल रहे ले लो. ये 4-5 निकम्मे मुंह मत लगो इनके. 6:30 बोल रहे. ठीक है 6:30. मैम आप मेरे वाले ग्रुप पे डाल दोगे कि 15 मिनट में बस आ रहा हूँ. 6:15. चलो. रिस्क एपेटाइट. against the risk appetite. D, prioritize risk based upon its severity. E, रिस्क रेस्पॉन्स. अब इसमें हो सकता है एक्सेप्ट द रिस्क, अवॉइड द रिस्क, ट्रीट द रिस्क, transfer or share the risk, and last
monitor the risk as हरीश सर का लेक्चर के लिए क्या उनको बोलने में खाली 15-20 मिनट मेरा और चलेगा 15-20 मिनट और है मेरा monitor the risk as it is a continuous process। दोस्तों आई एम रियली इम्प्रेस्ड हाँ कि तुम लोगों ने मुस्की का लेक्चर कैंसिल नहीं कराया एंड यू केप्ट इट लाइव। जिगरा लगता है इतना लिखने का मतलब मेरा हाथ कर्रा रहा है लिख लिख कर तो आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारी क्या हालत हो रही होगी। तो वेरी गुड यू डिजर्व टू पास। आ जाओ ये सारे डन है एंड टू द लास्ट क्वेश्चन एंड आई विल से ऑल द बेस्ट। ओके दो क्वेश्चंस हैं। Mani, managing director of Hui's Manufacturing Limited, had complained completed his MBA from Stanford's. He always believed that the best way to expand business is by staying relevant and in sync with the technology. He was part of various industry forums and was actively representing and voicing industry concerns to the government. He was attending the conference in Davos, wherein industrialists from different countries were presenting their views on business dynamics and challenges. One of the speakers at the conference was highlighting the importance of integrated reporting. Mani was inquisitive as he had never heard this concept. Once he was back to India, he discussed this with Jay, the financial controller, and Vijay, the company secretary. Vijay explained that integrated reporting is part of an evolving corporate reporting system. The primary purpose of integrated report is to explain the providers of financial capitals that how we are creating value over the time. Mani was inquisitive to know more about integrated reporting and he told Vijay that these decisions should be discussed with our board of directors as well. In this context, prepare a detailed report. What is integrated reporting? Benefits and challenge. I think तोहफा क्वेश्चन ये होता है, ठीक है, तोहफा क्वेश्चन इसको कहते हैं। सही है ना? तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या है, उसके बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। नेक्स्ट अप, रनिल एंड विकी both graduated from IIT Chennai, wanted to set up a consulting firm in governance and social sphere. Given its relevance in the current scenario, they had done quite some research and noted that ESG compliance are picking, as more corporates are looking forward to ESG compliant and demonstrating ESG principles. Meeting strong ESG standard is a positive governance indication for organization. It is estimated that the new mandate will impact not only more than 50,000 large listed companies but also companies based in the region outside pura time based. Ranil and Vicky were making a presentation to one of the directors about the ESG requirement, which included its compliance benefits and challenges. In this context, explain the key changes companies would establish to prepare the challenges ahead. ESG रिपोर्टिंग के मैंडेट में क्या चैलेंजेस आते हैं जिसके लिए हमें तैयारी करनी है, मतलब टेक्निकली वे फॉरवर्ड ESG की रिपोर्टिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए। आ जाओ जल्दी फट लिख देते हैं। शीट मैम शीट। Integrated reporting is a new process of reporting, founded on the idea of integrated thinking, which results into an integrated report
which results into an integrated report. An integrated report typically reports to its stakeholders as to how the organization has created value or eroded value over the time. It reports upon the following 6 capitals. And their interconnectedness. It provides a holistic picture of company's performance, promotes transparency, covers both financial and non-financial aspects in a single report. It's a concise report providing all the details about the 6 capitals, focuses on focuses on reporting on value creation, then only financial reporting, then only financial performance. बहुत है. ठीक है. Next
following are the challenges faced. Lack of standardization, companies are not willing to make these disclosures. It is a costly form of reporting. Lack of experts available in India. Lack of data for reporting. Conventional mindset of financial performance over anything. बोलो शेरो, क्लियर है? And we're about to write the last answer. डन है? चलो लास्ट आंसर. इसमें इनको क्या चाहिए था? ठीक है. Following are the key changes, that is way forward, for companies to prepare for challenges which it may face in ESG reporting. Every company going for ESG reporting, every company going for ESG reporting must appoint Chief Sustainability Officer
which will allow the company to effectively meet its sustainability goals. He would be there to influence and motivate people in the organization to deliver upon their sustainability goals. B. Create ESG budget. As the new requirements of ESG reporting will include collecting data, storing it, and appointing people to manage the same. This will require a lot of money. To overcome this challenge, an ESG budget policy can be introduced and followed. Monitor your own carbon footprint and also assess partners' sustainability practices. This will allow to reduce the overall carbon emission, resulting into better sustainability. If the above
are taken care of. Then ESG reporting can be managed easily against the challenges faced by an organization. Done. That's 8 people. This is it. So sorry, आपका थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा मुझे. This paper was lengthy और थोड़ा समझा के चल रहे थे, इसकी वजह से ज़्यादा टाइम लग गया. I hope this contributed well to your preparations. And now I'm super late for my next lecture, so I have to rush to the next class. बस एक ही मिनट में वहाँ पहुँचना है. I hope you enjoyed this series and you were able to understand. सर इसमें वो assess partner sustainability practice लिखा तो सही. Monitor your own carbon footprint and assess partner sustainability practices. अच्छा, was it worth it? अच्छा था. तो प्लीज क्या इस वीडियो पे आप बहुत सारे लाइक कर दोगे, बहुत सारे कमेंट्स कर दोगे? अच्छा, अगर ईमानदारी से तुम सबने इस पे कमेंट कर दिया तो मैं अभी आधे घंटे में पुराने वीडियो भी लाइव कर दूंगा, ये भी लाइव छोड़ दूंगा और कुछ प्राइवेट नहीं करूंगा. अगर सबका कमेंट आ गया तो, नहीं तो ये भी प्राइवेट हो जाएगा और फिर 1 तारीख से वापस ओपन होगा. सो इफ people write good comments over there, matlab good in the sense what's deserving, you get a live session from today, सारे के सारे live. चलो, thank you, all the best, love you, bye.